Yeah, good morning, team. Dream Float Services has entered into agreement with Visa Worldwide for launching global duty-free service program. Nazara Tech has said company has transferred 65 crores. 64 crores. This 64 crores was in SVB Bank, Silicon Valley Bank. Now they have, the money has come to them. So that they have kept it in a different account is what they have informed the exchange. Sonata Software has been chosen as the top SI partner for Bayer's new agri-food cloud solution. It is a B2B platform developed with help of Microsoft Software. Yesterday, we saw a few more banks going down. So this time it is a mayhem from Europe, and this was long due. It is Credit Suisse, which has been in trouble for many years, but with now they saying that last 2 years statement we have to restate due to faulty accounting. Now things have gone bad, and the bank was down 94% yesterday. Now, and this has pulled down all the European banks. So now we have problem in US and we have problem in Europe. But this will not directly impact India. But there are few companies which can be a software provider, or it can be few other asset which has been linked to them, which will have some impact. So there can be some correction as market is trading below 17,000. From current level, I don't think we will be able to rally. So there can be some sell-off before any recovery. But good sell-off is always very good for a long-term investor. In that angle, we have to think. India's trade data came. The trade deficit was almost flat month-on-month basis. It was at $17.4 billion. Both imports and exports have declined year-on-year basis. But when you compare on month-on-month basis, there was a moderate growth. So imports for the month of February was at $51.3 billion, which is up 1.3 billion month-on-month basis. Exports were up by 3% month-on-month basis at $33.9 billion. Very important to note is the services export has jumped by 36.8% year-on-year basis. So the services export stands at 29.2 billion on a gross basis. Net basis, it is $14.6 billion. So now the total trade deficit is hardly $2.8 billion, but we have remittances. Last full year we got remittance of $100 billion, which is very good money. Almost $8 billion is the surplus every month. So trade-wise, we don't have a problem, but we need to work on it. We need to increase our trade. Otherwise, we will get into problem. Sharda Energy has got approval from Pollution Control Board to expand rolling mill capacity from 180,000 tons per annum to 250,000 tons per annum. Ethos opened a new store in Bhopal. It is a 506 square feet shop. This is the first store in Bhopal. Ashiana Housing, they announced booking of units in phase 1 and phase 2 in Ashiana Ekansh project. Total 130 units have been booked, and the sale value is 102.76 crore. These are low cost units, so that is very important. Now, and crude is slowly coming down, which is very positive over a period of time. And there is a new thing which has come yesterday. International law firms can appear for arbitration and corporate cases only as per Bar Council. So international law firms, after a very, very long term, have been allowed. Audit firms came long back, but now even law firms have come.
this is very positive. It will generate employment, and even the professional approach of the lawyers will change. Geo postpaid, now the entry tariff is up 50%. So whatever yesterday was then, again Geo has cubed its tariff. So what appears from their tweaking of tariff is they are trying to improve their ARPU. So that means Jio and Airtel are working in tandem because there is no competition. And after 5G launch, they need more money. So the ARPUs will go. It is positive for Airtel and Jio Reliance also. Import of palm oil declines to 8-month low. There is a decline of almost 30%. Orient Paper approves capex aggregating 475 crores. Now it is towards modernization, de-bottlenecking of the manufacturing facility in Madhya Pradesh, and the capacity will become 400 tons per day. In next 24 months, the project will be on steam. Jubilant Food, there was this Poppies management which came, and they have aggressive plans with Poppies. So from Domino's, Poppies is now going to be their major thing, and they said they will open 50 Poppies in the next 1 year. They've already opened 12 Poppies in Bangalore and one recently in Chennai. And I read a report from a broking house after this Poppies. We need to understand South India, the people in South India are 98% non-vegetarian. Even eastern part of India, it is about 95% and above, they are non-vegetarian. Whereas Western and Northern India, 50% is only non-vegetarian. So the Poppies is a non-vegetarian menu. So they mainly do fried chicken. So they are special in chicken. So this will work out in southern part of India and eastern part of India. Whereas West and North will behave differently. So here 50 stores will be opened in Poppies in next 1 year. And in the medium term, 250 stores will be open, which is very positive for Jubilant Food. And gas stocks will benefit with lower gas prices. So I think GAIL India will get 2 cargoes of LNG each in March and April from Germany, SCFE. So it has been stopped from May, but now after 8-10 months, they have started to supply. Very positive for GAIL, and this is something we like GAIL at current level. Even if it corrects, it would be an opportunity to buy GAIL. We like Gujarat Gas, IGL, MGL, and even OMC stock like Hindustan Petroleum, BPCL, IOC will benefit from lower crude prices, but lower crude prices can be negative for ONGC and Oil India. But Oil India benefits more from gas resources than the oil thing. In the last news, Motherson's promoter, Samarada Motherson, promoter, Japanese promoter Shumito Wiring System is likely to sell 3.4% stake in a block deal. So with that, over to you, Kshitija. थैंक यू सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन. हम इस कॉल को एक बार हिंदी में कर देते हैं. स्टार्ट करते हैं. ड्रीम फॉर सर्विसेज ने वीजा वर्ल्ड के साथ टाई अप किया हुआ ड्यूटी फ्री सर्विसेज लॉन्च करेंगे. सेकेंडली, नजारा टेक्नोलॉजीज की जो 64 करोड़ रुपीस जो एसवीसी बैंक में फंसे हुए थे, जो कि सिलिकॉन वैली बैंक है, उन्होंने ट्रांसफर कर लिया डिफरेंट अकाउंट में. थर्ड है सोनाटा सॉफ्टवेयर ने SIBR के साथ एक टाई अप किया है एग्री फॉर क्लाउड के लिए, और ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ हेल्प करके ये टाई अप रहेगा. नेक्स्ट है मार्केट. अगर देखा जाए तो 17,000 के बिलो अगर गया है, हमें लगता है और सेल ऑफ थोड़ा आ सकता है पहले की रिकवरी के पहले, और यहाँ से हमें थोड़े नीचे के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं. ट्रेड डेटा देखा जाए तो डेफिसिट इस बार सिर्फ फ्लैट ही था, 17.4 बिलियन का था मंथ ऑन मंथ पे. इंपोर्ट देखा गया तो इंपोर्ट भी कम हुए थे और एक्सपोर्ट भी हमें फॉल ही देखा ईयर ऑन ईयर पे, और मॉडरेट था मंथ ऑन मंथ पे. इंपोर्ट देखा जाए तो 51.3 बिलियन थे, जो कि राइज हुआ 1.3 बिलियन से मंथ ऑन, और एक्सपोर्ट देखा जाए तो 3% का जंप देखा गया मंथ ऑन मंथ पे. सर्विसेज के अंदर हमें हाईएस्ट जंप देखा गया, जो कि 37% के आसपास ईयर ऑन ईयर, और 29.2 बिलियन ग्रॉस था, 40.6 बिलियन नेट था, और हार्डली हमें 2.8 बिलियन का डेफिसिट देखा गया. रेमिटेंसेस देखे जाए तो 100 बिलियन के आसपास है, जो कि सब मिला के टोटल 8 बिलियन का सरप्लस होता है.
यस्टरडे एक और बैंक यूरोप में फेल हो गई जो कि मेगम बैंक थी, और इसके चलते देखा क्रेडिट स्विस को भी जो कि उनकी सऊदी के शेयर होल्डर उन्होंने मना कर दिया, तो उसके चक्कर हमने देखा कि बहुत सारे यूरोपियन इंडाइसेस एकदम डीप कट्स पे देखे गए, और उन्होंने अपने जो स्टेटमेंट्स को भी रीस्टेट किया गया है, और फॉल्टी अकाउंट्स के चलते देखा गया जो डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा। तो थोड़ी सी जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है जिनका एक्सपोजर है बीएफएसआई सेगमेंट को, ये थोड़ा उनको इम्पैक्ट कर सकता है। शारदा एनर्जी ने भी कहा कि उनको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से अप्रूवल मिल गया है रोलिंग मिल स्टार्ट करने के लिए, जो कि करंटली 1.8 टन से बढ़ा के 2.5 टन तक लेके जा सकते हैं। इथोस से नया स्टोर ओपन किया है भोपाल में, जो कि 506 स्क्वायर फीट का है, और ये नया स्टोर रहेगा। आशियाना हाउसिंग ने भी एक अपना नया बिल्डिंग यूनिट जो एशांत करके है फेज 1 फेज 2 में लॉन्च किया है। 130 यूनिट्स के उन्होंने करंटली सेल कर दिए, जो कि 102.76 करोड़ के आसपास की वैल्यू है, सेल वैल्यू, और ये लो कॉस्ट हाउसिंग यूनिट्स बनाता है। क्रूड हम देख रहे हैं जैसे कि लोस पे आ गया है, $70 के नीचे ब्रेंट चला गया, तो पॉजिटिव रह सकता है टायर एंड पेन कंपनीज के लिए। और सेकेंडली जो कि क्रूड के जैसे एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, इनको भी ये बेनिफिशियल रह सकता है। फिर लोअर क्रूड प्राइस के चलते गैस के प्राइसेस भी बढ़े हैं, तो इसके लिए गैस स्टॉक्स को भी हमें लगता है बेनिफिट हो सकता है, जैसे गेल हो गया, गुजरात गैस हो गया, आईजीएल, एमजीएल, गेल अभी भी हमें लगता है बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन और लेवल्स में मिल रहा है। अगर हमें थोड़ी करेक्शन में मिलता है तो हमें लगता है यहाँ से गेल के अंदर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मदरसन के प्रमोटर है जापानीज के जो क्षेत्र में, तो है वो वायरिंग बिजनेस में अपना थोड़ा सा स्टेक डाइवेस्ट करेंगे। ओरिएंट पेपर ने अपनी केपेक्स जो है बढ़ाने वाले 475 करोड़ से, और वे बेसिकली डी बॉटलनेक करेंगे और मॉडर्नाइजेशन लेके आएंगे करेंटली उसके, और वे 24 मंथ्स के अंदर टोटल करेंगे 400 टन के आसपास का ये टोटल रहेगा। जुबलेंट फूड ने कहा कि पपाइज के साथ वो एग्रेसिवली अभी साउथ इंडिया में वो जाना चाहेंगे, और डोमिनोज के ऊपर थोड़ा सा वो कम ध्यान देंगे। पपाइज जो है अभी करंटली बैंगलोर में 12 स्टोर्स है और चेन्नई में 1 स्टोर है। साउथ इंडिया में देखा जाए 98% जो पॉपुलेशन है वो नॉन वेजिटेरियन है, और ईस्टर्न साइड में देखा जाए 95% नॉन वेजिटेरियन है। वेस्टर्न और नदर्न साइड में ही देखा जाए तो कि सिर्फ 50% के आसपास आता है। सो पपाइज एक बेसिकली फ्राइड चिकन ब्रांड है, और ये जैसे देखा जाए तो यहाँ पे स्टोर में अच्छा कर रहा है, तो इनका ये है कि इस साइड में भी इसे एग्रेसिवली आगे जाना चाहेंगे, और ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड में टोटल भी और नहीं 250 स्टोर ओपन करेंगे आगे मीडियम टर्म में। नेक्स्ट न्यूज हम देखेंगे टीसीएस पे। एविडेंस डेटा एनालिटिक्स जो कि यूएस बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, उन्होंने टीसीएस को चूज किया अपने क्लाउड बेस्ड फाइनेंशियल सॉल्यूशंस के लिए, और ये टेक इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा और स्ट्रीमलाइन करेगा ऑपरेशंस। जो डील फाइनेंशियल्स को डिस्क्लोज नहीं गई है, बट ये 4th डील रहेगी टीसीएस की 1 महीने के अंदर, और लगता है ये टीसीएस के लिए अच्छी है, जो कि थोड़े से जो जैसा सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनीज के लिए टर्बुलेंट टाइम्स में। पारस डिफेंस के लिए भी एक न्यूज, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है एमओयू, जो कि 14 मार्च को प्रिसीजन टेक्नोलॉजीज के साथ, जो कि इजरायली बेस्ड कंपनी है, और बेसिकली डेवलप करेंगे प्रिसीजन ऑप्टिक्स में, और ये इंडियन ग्लोबल डिफेंस के लिए अच्छा ही रहेगा। रामकृष्ण फोर्जिंग्स और टिटागढ़ वैगन ने भी एक कंसोर्शियम के साथ इमर्ज हुए L1 बिडर, और ये सप्लाई करेंगे फोर्ज व्हील, जो कि आत्मनिर्भर भारत स्कीम में रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। टोटल क्वांटिटी ऑफ फोर्ज व्हील देखा जाए तो 15,40,000 के आसपास है, जो कि 20 ईयर्स में सप्लाई करेंगे। केसी इंटरनेशनल में 1,028 करोड़ के ऑर्डर्स विन किए अक्रॉस वेरियस बिजनेसेस। जीएचसीएल को भी एक अप्रूवल मिल गया एनसीएलटी से डीमर्जर करने के लिए अपना स्पेयरिंग डिवीजन जीएचसीएल टेक्सटाइल्स। केपीआईटी होंडा ने केपीआईटी को फिर से सिलेक्ट किया है, जो कि उनका सॉफ्टवेयर डिफाइंड मोबिलिटी जर्नी है, जो कि फिर से डेवलप करेंगे। रोड मैप जो होंडा के लिए रहेगा। होंडा अगर देखा जाए तो केपीआईटी के लास्ट 8 ईयर से कस्टमर्स, और डील साइज अभी तक डिस्क्लोज नहीं गई है, बट कहा जाता है कि जो डील साइज है नॉट भी रियल साइज से काफी बड़ी है, और इसमें नियर अबाउट 2000 प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व होंगे। सो ओवरऑल की अच्छी न्यूज है कंपनी के लिए। कोफोर्स के लिए भी है कि रीसेंट प्रेस रिपोर्ट्स ने कहा कि कोफोर्स का एक्सपोजर यूएस रीजनल बैंक्स को था, जो कि उन्होंने क्लैरिफाई किया कि उनका जो एक्सपोजर रेवेन्यूज जो रीजनल बैंकिंग लाइन से बहुत ही लिमिटेड है, और उन्हें लगता है करंट मार्केट से इन्हें इवेंट से कोई इतना इम्पैक्ट उनकी बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट नहीं करेगा, और उन्हें मेंटेन किया कि उनकी जो कमेंट्री है लास्ट कॉन कॉल में वो उसे मेंटेन करेंगे और टारगेट रोबस्ट करेंगे। सीमेंट सेक्टर पे ये अपग्रेड है। ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस जैसे गिर गए $70 के नीचे, तो बेसिकली एनर्जी स्टॉक्स के लिए, एनर्जी प्राइसेस के लिए अच्छा है, और जो डिमांड है सीमेंट की करंटली स्ट्रांग है। प्राइस हाइक्स भी है जो डिले कर गए नेक्स्ट मंथ के लिए, जो कि ईयर एंड में फिनोमिनल रहती है कंपनीज के लिए, और वो अपने वॉल्यूम्स को पुश करना चाहते हैं।
इम्पोर्टेड कोल्स की भी जो प्राइसेस सब्सटेंशियली रिड्यूस हो गए, जो कि $135 पर टन है, जो कि इम्पैक्ट का रिडक्शन अगले Q2 में और तो ये अच्छी रहेगी अल्ट्राटेक के लिए। सीमेंट स्पेस में हमारी ये टॉप तक रहेगी। Technical and data update. If you see yesterday's trading session, Nifty opened on a higher note, but it failed to sustain at higher levels. As we can see in the closing session, Nifty gave away all of its morning gains of only 150 odd points, and it also beat in the second half the 17,000 crucial level and traded of yesterday. If you see it traded for a brief period, but ultimately yesterday, day before yesterday. But yesterday it closed below it, so below closing 17,000 is a not good indication for the index moving ahead. Nifty, anything now? If any bounce or something comes today, should be used as an opportunity to exit longs and create short position until we don't move over 17,300 zones. That would be a crucial for the index. And coming to the sectoral front, if we see Nifty, Pharma and Metal were the lone sector that closed in the green, while other sectors closed in the deep red, while PSU banks were the hit are which were lower by 1 odd percentage point. And now technically, if we see the Nifty is moving in a channel, and now Nifty is at the lower end of the channel. It has retested the channel again. It has retested twice, and we had seen bounces from those channels. And this is the third time we had seen on. You have to watch if this channel is getting breakdown, or we just move ahead and we get a relief rally from these zones. Secondly, now coming to the FIS data. So FIs are the long short ratio has reduced to 12%. So this is the long short ratio previous than the 15,200 when the FIs were the heavily shorted. Their long short ratio was 13 odd percent. Now the long short ratio has come to 12 odd percent. So whenever the FIs long short ratio has gone to the lowest, we see some buying interest, so we see a bottoming out from this level. So we need to watch out all ifs and buts over here. If this could be a bottom also, and if the channel is also getting breakdown, then we could see more further selling towards 16,500 and 16,600 zone. So that should be kept in the mind. Secondly, coming to the Bank Nifty also yesterday tried to breach the 39,000 mark, but it managed to hold at the in the closing session. Barring Kotak Bank, HDFC Bank, and Axis and ICICI Bank were creating pressure on the index, and they drove the Bank Nifty far more, and it was a swing in the. Again, it made a bullish engulfing pattern day before yesterday. Also, it made a same. So Bank Nifty is showing some pressure that striking from the global cues. Also, overall banking sector is now dealing under very deep pressure. So coming to the FIS data, then they have again created, derivatives data, they have again created shorts by to the tune of 1 odd percent, and long short ratio, Nifty PCR so OI stands at 0.67%. And coming to the Bank Nifty PCR OI comes at 0.59 compared to the closing of 0.53. So Nifty, Bank Nifty futures also saw a long liquidation to the tune of 0.84. So minorly longs have just reduced it. Now coming to the options data, Nifty options have seen 17,000, 72,000, 17,200 strikes were called. Writing is visible, whereas in the put side 16,900 and 16,700. So the writers have shifted their zone lower to 16,700 levels by 2.4 and 2.26 million. Similarly, in the Bank Nifty 38,900 and 39,000 are the strikes where we can see the major put writing that this could act as a base. While on the call front, 39,000, 39,300. 39,000 is now again a make and break level for the Bank Nifty index. Now coming to the FIS cash data yesterday sold to the tune of 1,271 crores, while DIs bought to the tune of 1,823 crores. And in the derivatives, as I said, they are at the lowest of the long short. So now coming to the SGX is showing a gap up of 43 odd points. So any Nifty needs to first of all sustain above this level. So any more relief rally towards 1,700, 1,700 should be used as an opportunity to exit loans. So that's it from mine. I'll hand over to Bunty sir for more updates. Thank you, Itendra. Good morning, sir. Good morning, team. Few updates from my side. Starting first on the cement update, cement sector. Brent crude prices have fallen below $70. This bodes well as other energy prices also move in same tandem. Demand for cement is strong currently. Price hike is delayed to next month, which is a year-end phenomena, as all companies are trying to push volumes. Imported coal prices have also substantially reduced to $135 per ton. An impact of this reduction will be seen in Q2 next year, that is FY24. This bodes very well for cement companies, and among the cement pack, we prefer Ultratech. It's our topic among the cement pack. Next is on the Coforge.
In light of recent press reports that have highlighted the Coforge exposure to US regional banks, the company has clarified that its exposure to revenues from the US regional banking clients is very limited. The company does not see current market events in any manner impacting its performance. They have maintained commentary provided during the last conference call around performance outlook and continue to target robust growth. So they have maintained the guidance for the next quarter as well. So this seems to be positive. KPIT. Honda has chosen KPIT to accelerate its software defined mobility journey. As part of this deal, KPIT will develop SDV roadmap for Honda, which has been KPIT's customer for the last 8 years now. The deal size has not been disclosed, but Honda has set out its SDM roadmap until 2030. This deal is bigger than the deal that KPIT previously signed with Renault in terms of engagement, as it will involve 2,000 professionals. So this seems to be positive news with respect to KPIT. Next is TCS. Uh, F-Stand Data Analytics, which is a US-based financial services company, has chosen TCS to build cloud-based financial solutions for the company. TCS will also enhance the tech infrastructure and streamline operations. The deal financials are not disclosed. However, this is the fourth deal win for the TCS in the past 1 month. So we believe this is very much positive with respect to TCS, especially in the turbulent times like these. We will remain positive on the TCS. Next is on the Paras Defense and Space Technologies. The company has entered into an MOU on March 14 with Controp Precision Technologies, Israel company, with an intent to create a new opportunities and expand both parties' business in the Indian as well as global defense sector. So this seems to be positive news with respect to Paras Defense. Next is Ramakrishna Forgings and Titagar Wagons. Consortium of Ramakrishna Forgings and Titagar Wagons has engaged as the lowest bidder, that is L1, as per the financial bid opening date 14th March for manufacturing and supply of forged wheels under Atmanirbhar Bharat by the Ministry of Railway, Government of India. The total quantity of forged wheels to be supplied will be around 15 lakh 40,000 wheels over a period of 20 years. So this seems to be a positive news with respect to Ramakrishna Forgings as well as Titagar Wagons. Next is KEC International. They have shared that they have secured new orders worth 1,028 crore business one across its various business lines. So this bodes well for the KEC International. Lastly, JHCL. NCLT approved the demerger of the spinning division into GHCL Textiles. So this seems to be positive as it will give the uh, fresh valuation of value for the company accretive as for the GHCL.